अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में से यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट और लॉन्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में जरूर आते हैं। यूनिट नंबर 1 से हम देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नंबर 2, डिफाइन एलिमेंट्स, आल्सो गिव इट्स टाइप्स। नंबर 3, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एलिमेंट हैविंग मास नंबर 288 एंड एटॉमिक नंबर 92। वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो और आप 100% नंबर हासिल कर सके। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी डिफाइन वैलेंसी, आल्सो गिव एग्जांपल्स। नंबर 5, डिफाइन सिंबल्स, आल्सो गिव इट सिग्निफिकेंस, राइट डाउन द सिंबल ऑफ आर्सेनिक एंड सिल्वर। Number 6 है what do you know about variable valency. Number 7, calculate the formula mass of K2SO4 and Na2SO4. How much? Next question, how homogeneous mixture is different from heterogeneous mixture. Number next है जी differentiate between atomic number and mass number. Number 10, define relative atomic mass. How is it related to gram? Number 11, define empirical formula. Write down the empirical formula for sand and glucose. Number 12, write down the formula of sugar, water, silica, glucose, sugar and sulfuric acid. Number 13, differentiate between molecular mass and formula mass. Number 14, differentiate between monoatomic and homoatomic molecules. Number 15, define mole with example. Number 16, define Avogadro's number. Number 17, calculate the number of moles in 40 gram of H3PO4. Number 18, state 3 differences. Why do you think air is a mixture and water is a compound? Number 19, define atomic mass unit. Why is it needed? पहले आपने atomic mass unit को डिफाइन करना है, फिर उसकी नीड बतानी है कि वो क्यों नीडेड होता है। नंबर 20 है जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। और नंबर 21 है जी डिफाइन मिक्सचर, गिव एग्जांपल्स आल्सो। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें क्या क्या है जी डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 3 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। नंबर 4 है इफ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 22 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मेनी सल्फेट आयन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 का क्यूब। डिफाइन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन ओनली कर लें यूनिट 1 से। बाद यूनिट 2 की बारी आती है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ऑन जो है वो कौन से हैं। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, इसमें सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन उसकी बतानी है। नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नंबर 3, व्हेन डज एन इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन एनर्जी। नंबर 4, डिफाइन क्वांटम एंड क्वांटा। नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इनका डिफरेंस आपने बताना है। Number 6, differentiate between shell and subshell. Number 7, write down the names of subshell in and shell. Number 8, define electronic configuration. Number 9, write down electronic configuration of sodium, chlorine, Mg2 plus और potassium और right. उसके बाद आपने बताना है जी an element has atomic number 17. How many electrons are present in Kl and M shells? Right, in shells में आपने इलेक्ट्रॉन की तादाद बतानी है। शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में इतने ही है। अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नंबर 2, एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। राइट, ये दो हिस्सों में पार्ट है, इसलिए दो हिस्सों में आपने इसको आंसर करना है। नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है जी, यूनिट नंबर 2 से ओनली ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी यूनिट नंबर 3 के ऊपर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। स्टेट पीरियोडिक लॉ। नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। Number 3, define blocks. Why elements are called S and P block elements. Number 4, differentiate between short and long period. Number 5, differentiate between period and groups. Number 6, what do you know about anthranide and actinide series. Number 7, define atomic radius. Give examples also. Why atomic radius decreases in period from left to right. इसकी रीजन आपने बतानी है। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट और गिव इट स्ट्रेंथ्स इन पीरियोडिक टेबल आल्सो। नंबर 10 है जी राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन फैमिली।
और नंबर 11 है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव एग्जांपल्स आल्सो। नंबर 12 फ्रॉम विच एलिमेंट lanthanide series stars, what is its atomic number, define negativity in question number 13 और give its strengths in periodic table also. Number 14 है जी define electron affinity, give its strengths in periodic table. Trends आपने genuine questions में 7 उसके बताने हैं. Number 15 give the trend of ionization energy in periodic table. Number 16 what are the elements arranging in group 3 to 12 called, उसको क्या कहा जाता है जिसमें 3 to 12 जो है वो ग्रुप्स को अरेंज किया जाता है. बाय शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक कैटायन फॉर्मेशन इजी. यूनिट नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है इसलिए आप ओनली शॉर्ट करेंगे अभी जो मैंने आपको बताया. यूनिट 4 में शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, विच काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन N2. नंबर 2 डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नंबर 3 डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. Number 4 differentiate between donor acceptor. Number 5 define ionic bond, give example. Number 6 differentiate between double and triple covalent bond with example. Number 7 define metallic bond. Number 8 differentiate between polar and non-polar covalent bond with example. Number 9 define dipole interaction. Number 10 how does ice floats over the surface of water. Number 11 define hydrogen bonding, give examples also. Number 12 why ionization energy of metal is low. Number 13 more electronegative elements can form bond between them. Justify, इस आंसर को आपने justify करना है. Number 14 why a covalent bond becomes polar. और number 15 है जी what is the relationship between electronegativity and polarity. लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में why boiling point of water is higher than alcohol. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है तो ओनली 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसमें से करने हैं. नंबर 1 है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स. नंबर 2 एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन डिटेल. नंबर 3 है जी डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बतानी है आपने. नंबर 4 है जी डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन हाउ डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. राइट, ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए. यूनिट नंबर 5 में जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें. नंबर 1 स्टेट्स बॉयल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन systolic and diastolic pressure. Number 3 define absolute zero temperature. Number 4 state Charles law, give its mathematical form. Number 5 evaporation is a cooling process, उसको explain करना है. Number 6 define evaporation, on what factors evaporation depends, explain, उसको करें. Number 7 है जी define vapor pressure, give example. Number 8 है define dynamic equilibrium. Number 9 convert 172 K into Celsius and minus 30 Celsius into K. Number 10 what is the relation between evaporation and boiling point of a liquid. Number 11 है how vapor pressure is affected by intermolecular forces. Number 12 what is the vapor pressure of ethyl alcohol and diethyl ether at 0 degree centigrade. और उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो only 4 हैं. Number 1 a gas at a pressure of 912 millimeter has a volume of 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.4 atm. Number 2 है जी define Boyle's law, write its experimental verification. Number 3 define vapor pressure, discuss the factor affecting on it. Number 4 है जी define Charles law, write its experimental verification. उसके बाद बारी आती है जी यूनिट नंबर 6 की. यूनिट नंबर 6 के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ओनली 12 है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 है. शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस कॉल्ड. नंबर 2 हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड. नंबर 3 व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन unsaturated and supersaturated solution. Number 5 differentiate between dilute and concentrated solution. Number 6 define m/m percentage and v/m percentage. आपने इसको define करना है कि what are these terms. Number 7 what do you mean by v/v percentage. What is the molarity and give its formula to prepare the molar solution. ये number 8 question है. Number 9 define solubility, also give its factors. Number 10 how 1 molar solution is prepared.
Number 11, define concentration. Write down the names of ways in which the concentration units are expressed. Number 12, how much NaOH is required to prepare its 500 centimeter cube of 0.4 M solution. Right, इसमें long question only 3 है. कौन से? Define saturated solution, how it is prepared. Number 2, how dilute solution is prepared from the concentrated solution. यानी concentrated solution से आप dilute solution कैसे निकाल सकते हैं. Number 3, explain different ways to express the percentage. उसके बाद है यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है उसके जी. डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. गिव एग्जांपल्स आल्सो. नंबर 2, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज अ रिडक्शन. एक्सप्लेन. आपने जो है वो कोड को एक्सप्लेन करना है. नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. Number 4, what is meant by alloying? Give examples also. Next short question है, why O2 necessary for rusting? ऑक्सीजन क्यों जरूरी है rusting के लिए? Number 6, write redox reaction taking place during the electroplating of chromium. Number 7, why the anode does carries negative charge in galvanic cell but positive charge in electrolytic cell. कि electrolytic cell में positive charge क्यों होता है और galvanic cell में negative charge क्यों होता है? Number 8, differentiate between oxidizing and reducing agent. Number 9, define electrochemical cell. Write the names of electrochemical cells. Number 10, differentiate between electrolyte and non-electrolyte. Number 11, define oxidation states. Also give any 2 rules. उसके 2 rules बताने हैं. Number 12, define redox reaction. Number 13, differentiate between strong electrolyte and weak electrolyte. Identify them from the following compounds. जो कंपाउंड्स की लिस्ट दी है इनमें से आपने आइडेंटिफाई करने हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नंबर 14, डिफाइन corrosion, also give its condition. Number 15, define rusting, give the formula of rust. Number 16, explain the term oxidation and reduction on the basis of electronic concept with example. Number 17, define galvanizing, give its advantages. Number 18, why does aluminium not rust? Number 19, find out the oxidation number of sodium in HNO2, HNO3 और AgNO3. नंबर 20 और लास्ट जो है वो इस यूनिट का शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गिव इट्स एडवांटेजेस टू. इस यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से? हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज कैरीड आउट. नंबर 2, राइट डाउन द रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन. नंबर 3, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन. Number 4, describe oxidation and reduction in terms of loss and gain of electrons. Number 5, explain the process of rusting. उसके बाद आ जाता है जी यूनिट नंबर 8, केमिकल रिएक्टिविटी. इसके शॉर्ट क्वेश्चन है. ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपके तमाम जो है वो कंफ्यूजन दूर हो. और अगर आपने तैयारी जो है वो पहले से नहीं की हुई तो अब आप इस पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. नंबर 1 क्वेश्चन शॉर्ट है जी, डिफाइन मेटल्स, आल्सो गिव इट्स क्लासेस. नंबर 2, differentiate between physical properties of metals and non-metals. Number 3, electropositivity और metallic character, also give its trend. और उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, why activity of the metal increases down the group. Number 5, why alkaline earth metal are less reactive than alkali metals. Number 6, why are silver and gold least reactive. Number 7 है जी, why silver not used in pure. Number 8 है, write down the unit of purity of gold. Number 9, give the uses of gold and silver. Number 10 है जी, why platinum is used for making jewelry. Why copper is used for making metal wire. Number 12, write down the names of 4 noble metals and noble gases. Number 13, define non-metals. Describe the trend of non-metallic characters in groups and periods. Number 14 है जी, define halogens. Give names of the members of this family. और नंबर 15 है, गिव रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे जी शॉर्ट. राइट डाउन 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस. नंबर 17, कंपेयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो ये थे जी, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन है. और आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें. इंशाल्लाह ताला बच्चों आपका पेपर
बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको स्कीम की जरूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देती हूँ, है वो आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी अपनी तैयारी के लिए। अच्छे क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी और अब उसने तैयारी करनी है तो वो ये क्वेश्चंस कर ले जिससे उससे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।